Okay, Assalamu alaikum. So today we will discuss about the infertility. We discuss nice guideline and some talk article regarding it. So how much infertility affect that infertility affect 1 in 7 heterosexual couples in UK. Okay, that is the BCQ, that how much infertility affect. So it is affect 1 in 7. Okay, so what are the causes of the infertility? The most common is the factor in the male causing infertility, that is the 30%, and unexplained infertility is the 25%, ovulatory disorder 25%, tubal damage 20%, uterine and the peritoneal disorder is the 10%. Okay, 40% of the cases disorder are found in both men and the women. ओके, सो मेन में भी और वुमेन में भी 40% दोनों में केसेस डिसऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। 40% दोनों में मिलते हैं। बाकी सबसे मोस्ट कॉमन जो काज है इनफर्टिलिटी का वो क्या है? मेल काजिंग इनफर्टिलिटी फैक्टर्स 30% है, फिर उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड है और ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, उसके बाद हाउ मच द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द फर्टिलिटी प्रॉब्लम। स्ट्रेस कैसे फर्टिलिटी पे असर करता है? क्योंकि स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि स्टीरॉयड हार्मोन कॉर्टिकोस्टेरॉयड रिलीज़ होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉयड रिलीज़ होता है तो वो फिर क्या करता है, एंड्रोजन्स जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन्स हैं, उसको डिक्रीज़ करता है। तो दैट्स वाई इट अफेक्ट इन द फर्टिलिटी इन द मेल, बट इन द फीमेल इट रिड्यूस द लेबिडो एंड डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरकोर्स, सो दैट इट कैन लीड्स टू द फर्टिलिटी प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद देयर काउंसलिंग मस्ट होती है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में। काउंसलिंग हमेशा मस्ट होती है। वी विल काउंसल द कपल बिफोर द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट। देयर मस्ट बी द इंडिपेंडेंट काउंसलर एंड द सपोर्टिव ग्रुप। ओके, okay, how much chances of the conceptions? Agar if a couple comes at you and she says that she is not conceiving since 1 year and she's not using any contraceptive method and her age is the 40 years and she do the regular sexual intercourse, so the chances of the conception is the 80%. Okay, but if not conceive in the first year, then in the second year they have the chances of the conception is the 90%. Okay, okay, how much conception rate in the IUI? If the woman is under the age of the 40 years and she is stuck in the 6 cycles of the IUI, so the pregnancy rate is the 50% within the 6 cycle, and within the 12 cycle the pregnancy rate is about 75%. Using the fresh sperms, it increase the pregnancy rate as compared to the cryopreserve or frozen sperm. Okay, the female that fertility, that female fertility and the male fertility, that is decline with the age. We all know about that. Okay, what do you mean by the regular sexual intercourse? The vaginal sexual intercourse that every 2 to 3 days optimize the chance of the pregnancy. Okay, so the intercourse every 2 to 3 days, that is called the irregular intercourse. Artificial inseminations must be done around the time of the ovulation. Okay, so what are the lifestyle modification that affect the fertility? Alcohol, if the female is taking the alcohol and that she is taking more than the 1 or the 2 units, so it affect the fertility. And when the male taking the alcohol and it is and he is drinking more than the 3 to 4 unit, then it affect the semen quality. So that leads to the increased risk of the infertility. Smoking also affect in the male and the female. In the male, it reduce the semen quality, and in the female, it reduce the transport of the sperm. So that's why it affect the fertility. Okay, some caffeinated beverage, and there is no evidence association with the fertility. Okay, well, how much weight affect the fertility? If the patient comes at you and her BMI is more than the 30, so it affect the fertility. You will advise her to lose weight. And when the BMI is less than 19, it also affects the fertility because it is most common in the hypothalamic amenorrhea and in the patient having the anorexia nervosa. So in these patients, we will give the treatment of the gain weight and take the calorie diet and reduce the exercise. So by increasing weight, they have the regular menstrual cycles and they are conceived naturally. Okay, so in the main, the weight is also important. If the BMI of more than the 30, then it reduces the fertility in men also.
Okay, what are the other modification? Tight underwear that also affect on the fertility when the scrotal temperature is increased, so it reduces semen quality. But wearing the losing or loose underwear, it does not increase the improvement of the success rate or the improved fertility. Some occupation related with the fertility, so we will also take the history of the occupation. Some recreational drugs also affect the fertility of the male and the female. There is a no role of the complementary therapy in the fertility. We will give the folic acid in the when the patient comes for the treatment of the fertility. So we will give the folic acid before the conception and up to the 12th week of the gestation. Okay, the dosage of the folic acid is 0.4 milligram per day, but if she has a history of the previous neural tube defect, or she has the BMI more than the 30 and having the diabetic or taking the anti-epileptic drug, so in these cases we increase the dose of the folic acid, that is the 5 milligram. Okay, so first of all, when the couple set come at you, then you will take the history and find out the cause. Okay? After that, you will do the fertility assessment. If the couple, if the patient says that she is not conceived since 1 year, and she's doing the regular sexual intercourse, and her age is less than the 40 year, and she's not taking any medicine, so in this case you will investigate further. And when the couple taking the 6 cycles of the IUI and still not conceived, then you will clinically assess and investigate this case. Okay, in some cases you will do the early referral. What are these cases? When the age is more than the 36 years and when there is a known cause of the infertility or the history of the predisposing factor for the infertility, or when the patient is taking the treatment of the such disease like the cancers in which the chemotherapy and the radiotherapy, we already know that that may cause the iatrogenic infertility. So in these cases you will counsel the patient and refer the patient to the early specialist, early referral to the specific specialist center that's for the that are for the infertility treatment. So you will do the early referral to the fertility specialist. Okay, what are the criteria in the patient having the chronic viral disease, just like the hepatitis C, B, and the HIV? In these cases, you will refer to the special center for the infectious disease and that further investigate and treat the patient. Okay. So now we will discuss about how will you investigate in the main. First of all, you will send her semen analysis. What are the parameter of the semen analysis according to the WHO? The semen volume is a 1.5 and pH is 7.2. Concentration is 15 million per ml. Okay, total number 39 million. Total motility 40% are more motile, 32% are more with the progressive motility. Vitality is 58%. Sperm morphology is 4%. Okay, when will you repeat the semen? You will repeat the semen if there is abnormal form, or then you will repeat the semen after the 3 months to confirm your diagnosis. But in the case of the azoospermia or there is the severe oligozoospermia, in these cases you will repeat the semen before the 3 months as soon as possible. Okay, so there is a notice for the anti-sperm antibodies is recommended. What is the mild male factor infertility? When the two or the more parameter in the semen analysis is below the 5th centile, then you will call the mild male factor infertility. Okay, so this is the investigations we will done in the male. What investigation you will done in the female when she comes at the treatment for the infertility? First of all, you will take the history. If she's saying that her menstrual cycle is regular, then you will do only 21-day progesterone. Okay, the normal value of the 21-day progesterone is more than the 30 nanomole, then it means the cycle is ovulating. But if she has the irregular cycle and the cycle length is 35, then you will do the 28-day progesterone, and then you will repeat the progesterone level weekly until she has okay. So if the patient having the irregular cycle and the length of the cycle is the 35 days, then you will do the serum progesterone level at the 28 days, and then you will repeat the serum progesterone every weekly since the menses start. Okay,
Women with irregular cycles, if she has the history of the irregular cycle, then you will do the FSH LH. Otherwise, you will not do the FSH and LH in every patient. And there is a no role of reprolactin in the thyroid function in the endometrial biopsy. If there is a history is not indicated, then there is a no role to do these investigation for the treatment of the fertility. Okay, so there is the normal values of the progesterone in the female mid-cycle, that is the 5 to 20 nanogram and 15.9 to 63.6 nanomole per liter. Okay, so that's the normal values, and when the progesterone 21, the progesterone is the 30 nanomole per liter is more than that, then we will say that the cycle is ovulating. Okay, if all these tests are the normal, then what are the further investigation? Then you will do the tubal testing. So there is a few criteria regarding that tubal testing. If there is a no any comorbidity like the no any infections, no any previous history of the PID or ectopic and the endometriosis, then you will do the ultrasound guided, not X-ray guided. Okay, ultrasound guided hysterosalpingography. Okay, if the patient have the history of the comorbidity, then you will do the lap and diet test. Don't do the hysterosalpingography in those patients having the history of the medical comorbidity. Okay, so after that, if you are decided for the IVF treatment, then you will must know the viral status of the patient. Okay? Or if you decided for the donor inseminations, and you will find that the donor is the test positive for the HIV, hepatitis B or the C, then you will offer to the specialist advice in the counseling and the appropriate clinical management before the treatment of the fertility. If the partner is hepatitis B positive, then you will offer the vaccinations and before the starting the treatment of the fertility. If the couple is if the couple in which the man has the hepatitis C positive, so what you will do in this case, then you will counsel that there is a transmission rate is very low, but men with the hepatitis C should discuss the treatment. After that treatment completed, and then you will counsel her for the conception. Okay, what are the criteria for the viral transmissions HIV? If the man is a positive for the HIV, so there is a very low risk of the transmit to the during the sexual intercourse if the man is taking the HRT regularly, and the copies of the HIV RNA virus is less than the 50 and it is more than the 6 months, and there is no any infections present along with it, and the unprotected intercourse is only done at the time of the ovulation. So if he is following all these criteria, then the transmission rate is very low. But if he is not compliant for her medicine, and copies of the HIV RNA virus is more than the 50 copies, so in this case you will do the offer her the sperm washing. And when you will not sure about the HIV status or the copies, then you will also consider the sperm washing. Okay, HIV negative woman does not need of the pre-exposure prophylaxis. Okay, you will offer for the testing of the rubella before the treatment of the IVF, and if she is suspected, then you will offer the vaccine, and you will counsel her to avoid the pregnancy at least 1 month. Cervical screening, you must done the cervical screening according to the national screening program. Okay, what are the criteria for the screening for the chlamydia trichomonas before the IVF? You will do the screening of the chlamydia trichomonas before the uterine instrumentation. If she is positive, then you will give the treatment and contact tracing. And but if you does not screen for the chlamydia, then at the time of the uterine instrumentations, before the uterine instrumentations, you will give the prophylactic antibiotic. Okay, so that's all the investigations you will done before the IVF. Okay, now we will discuss about the causes of the male infertility. Okay, so causes of the male infertility. So it is divided into the testicular, pre-testicular and the post-testicular. Okay? So the
Pre-testicular is the less than the 1%, it including the hypothalamic disease, that is the Kalman syndrome, and the pituitary disease, it including the pituitary insufficiency, tumor, radiations, and the surgery, and the exogenous hormone, that is the anabolic steroid, glucocorticoid, and hyper and the hypothyroidism. Okay, what are the causes of the testicular? That is the most common, and it causes the 67% in the male infertility, in which the genetic causes that including the chromosomal clinifar and the Y chromosomes microdeletion and Noonan syndrome, and other is a cryptorchism. Acquired injury, orchitis, varicocele, systemic disease, chemotherapy, radiotherapy, testicular tumor, and the idiopathic. Cause of the male infertility, that is the post-testicular, that occur in 41%, it including the congenital cystic fibrosis and the congenital absence of the vas deferens, Young syndrome, and vasectomy, infections, chlamydia, gonorrhea, and the iatrogenic vessel injury, disorder of the sperm functions and the motility, that is the immotile cilia, maturation defect, immunological infertility, sexual dysfunction, timing in the frequency, erectile and the ejaculatory dysfunctions, diabetic, multiple sclerosis, spinal and the pelvic cord injury. Okay, so that's all causes of the male infertility. So how will you, first of all, we will discuss the investigations. We will do the semen analysis, and then we will diagnose the cause of the infertility. If there is a cause is the hypogonadotropic hypogonadism, so we will offer the gonadotropin drug. You will only give the gonadotropin drugs in the hypogonadotropic hypogonadisms. Otherwise, you will not give in the any gonadotropin drugs or any androgens, bromocriptine, or any corticosteroids or any antibiotic in the treatment of the इनफर्टिलिटी टू मैन. ठीक है, तो सिर्फ हम गोनाडोट्रोपिन तब देंगे जब हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म्स मेन में हो. अदरवाइज हम मेन में किसी भी कंडीशंस में ना हम एंटी एस्ट्रोजन जैसे कि क्लोमिफेन सिट्रेट है या गोनाडोट्रोपिन से बाकी जो बाकी डिसीज़ में हम नहीं देंगे. सिर्फ एक ही कंडीशन में देंगे हम हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म्स में. ओके, surgical management of the factor infertility, if there is obstructive azoospermia. Okay, so either you will do the surgical correction of the epididymis blockage or you will do the सर्जिकल स्पर्म रिकवरी एंड डू दी IVF. ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप सर्जिकल करेक्शन करें epididymis ब्लॉकेज की, या तो फिर आप सर्जिकली स्पर्म निकालें और IVF करें. Okay, you will not offer the surgery for the varicocele because it does not affect the fertility treatment or does not improve the pregnancy rate. Okay, what are the management of the ejaculatory failure? You will do the invasive method of the sperm retrieval or the use of the assisted reproductive procedure. Surgical management of the male factor infertility, we already discussed it. Classification of the ovulatory disorder. So we discussed the male infertility, we discussed the causes, investigations, and as well as the treatment. Now we will discuss about the female infertility, what are the causes and what are the treatment. Okay, so it is further divided into the group 1, group 2 and the group 3 according to the WHO criteria. Group 1 is the hypothalamic pituitary failure, that is the hypogonadotropic hypogonadism. Group 2 is the hypothalamic pituitary and the ovarian dysfunction, that is the PCOS, and the group 3 is the ovarian failure. Okay, what is the treatment in the group 1, that is the hypogonadotropic hypogonadisms, in which the most common cause is the hypothalamic amenorrhea and the patient having the anorexia nervosa and having the BMI is less than the 19. So in these cases we will counsel the patient to moderating their exercise levels and take the proper diet and increase the weight, and as well as we will give the medical treatment. If still not conceived, then we will give the medical treatment for the infertility, that is the pulsatile administrations of the gonadotropin releasing hormone or the gonadotropin with the luteinizing hormone activity. Okay, so what are the treatment in the group 2, that is the PCOS, in which the patient having the BMI is more than the 30, we will counsel about the exercise and the low sweat. And in the medicine we will give the ovulation induction, that is the given by the clomiphene citrate or the metformin, or you will give in the combination form, and you will do the ultrasound monitoring because there is increased risk of the multiple pregnancy. We will not give the ovulation induction more than the 6 months. Side effect of the metformin is the nausea, vomiting and the other GI disturbance. Okay, if the patient is resistant to the clomiphene citrate, then you will give the laparoscopic drilling and combine treatment with the clomiphene citrate and the metformin if you will not give in the first line treatment.
are gonadotropin, but you will not give the gonadotropin in the patient having the PCOS because it increases the risk of the OHSS. So you will not give in the patient of the PCOS. Adjuvant growth hormone treatment, there is a no any role of the adjuvant growth hormone treatment in the infertility. Okay, monitoring the ovulation induction during the gonadotropin therapy, because the gonadotropin increase the risk of the OHSS, so you will regularly monitoring by the ultrasound to measure the follicular size and the number. So you will reduce the risk of the multiple pregnancy and the OHSS. Okay, in the case of the hyperprolactinoma, you will give the dopamine agonist such as the bromocriptine. Okay, so that's the medical treatment of the ovulation disorder and group 1 and the group 2. In group 3, when there is ovarian failure, so you will do the IVF with the donor egg. Okay, so now we will discuss the surgical method. If there is a mild tubal disease, then the surgery is more effective than no treatment. So proximal tubal obstruction, you will do the selective salpingography plus tubal catheterization और हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड ट्यूबल कैन्युलेशन. ठीक है, तो दो ऑप्शन है. अगर प्रॉक्सिमल ट्यूब आपका उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो या तो हम सल्पिंजोग्राफी के ज़रिए ट्यूबल कैथेटराइजेशन करेंगे, उसको खोलेंगे, ठीक है, या तो हम हिस्टेरोस्कोपिक करके ट्यूबल कैन्युलेशन करेंगे. तो ये आपने रिमेंबर याद रखना है. अगर डिस्टल ट्यूबल डिसीज़ है हाइड्रोसल्पिंग से, तो उसमें क्या है कि अगर आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट डिसाइड कर रहे हैं तो फिर सबसे पहले आप सल्पिंजेक्टमी करेंगे लेप्रोस्कोपी के ज़रिए, फिर उसके बाद आप आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए उसे काउंसिल करेंगे. ठीक है, सो इट इंक्रीज द प्रेगनेंसी रेट एज वेल एज द लाइफ बर्थ रेट. यूट्राइन सर्जरी and the intrauterine additions, you will do the hysteroscopic radiolysis in the Asherman syndrome that restore the menses and the improve the chances. We already discussed the guideline regarding the Asherman syndrome. Okay, what are the treatment criteria in the unexplained infertility? You will never give the ovulation induction in the patient having the unexplained infertility. Okay, nor you will give the IUI in the patient having the unexplained infertility. So what are the treatment? You will counsel her for the try to naturally conceive, but if she is not conceive and since more than 2 years, so you will give the treatment of the IVF. Okay, तो मतलब अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी में हम ओव्यूलेशन इंडक्शन नहीं देंगे, पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि आप खुद से कोशिश करेंगे बच्चा हो जाए 2 साल तक. अगर फिर भी नहीं होता तो फिर उसके बाद आप उसे IVF के लिए काउंसिल करेंगे. ओके, सो इंट्रायूट्राइन इंसेमिनाइजेशंस कब करते हैं हम? इंडिकेशन क्या है? वजाइनल इंटरकोर्स इन नॉट पॉसिबल व्हेन द पीपल विद द सेम सेक्स, condition that require the specific consideration, just like the sperm washing in the patient having the HIV positive. If not conceive after the 6th cycle of the IUI, despite the evidence of the normal evolutions in the tubal patency and the semen analysis, then you will offer the further 6 cycle. ठीक है, तो टोटल आप 12 साइकिल दे सकते हैं. अगर पेशेंट मोस्टली 50% पेशेंट आर कंसीव, हम पढ़ चुके हैं पहले कि 50% पेशेंट 6 साइकिल में कंसीव कर जाते हैं, पर अगर नहीं कर पाते तो फिर हम अगर ओवुलेशन भी नॉर्मल है कॉजेज़ को फिर हम क्या करेंगे फर्दर, हमने पढ़ा था कि अगर 6 साइकिल तक हम उसे देखेंगे फिर हम क्लिनिकल असेस करेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे. क्या क्लिनिकल असेस करेंगे कि ओवुलेशन नॉर्मल है, ट्यूबल पैटर्नसी सही है और सेमिनल एनालिसिस हम देखेंगे. अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर हम उसे फर्दर 6 साइकिल के लिए छोड़ सकते हैं. अच्छा, किन कंडीशंस में हम ओके ट्रीटमेंट स्पेसिफिक कंडीशन, ऐसा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है उसमें क्या ट्रीटमेंट है? अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस एंड द माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी. अच्छा, इनमें क्या ट्रीटमेंट है? डोंट रूटीनली ऑफर द इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस. ठीक है, तो इनमें हम IUI नहीं करते. ठीक है, इधर विद और विदाउट द ओवेरियन स्टिमुलेशन. फॉर एग्जांपल व्हेन द पीपल हैव द सोशल एंड द कल्चर, अगर कोई मतलब एक्सेप्शनल केसेस है जिसमें पेशेंट IVF नहीं करवाना चाह रहा तो फिर उसको तो छोड़ के बाकी अदरवाइज हम इन कंडीशन में IUI नहीं करते. ठीक है, क्या फिर उसका ट्रीटमेंट है यही है कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप 2 साल के लिए खुद से ट्राई करें, नेचुरली कंसीव की तरफ जाएं. अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर हम IVF कंसीडर कर सकते हैं.
ओके, आईवीएफ की पेशेंट हमसे पूछ सकती है ना कि हम कि सक्सेस रेट कितना है आईवीएफ का। तो सक्सेस रेट डिपेंड किस पे करता है, फीमेल एज पे करता है, उसकी एज कितनी है, पहले उसका लाइव बर्थ है या नहीं। अगर पहले उसका बच्चा है तो फिर उसमें सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आईवीएफ ट्रीटमेंट इज़ अ मोर इफेक्टिव द प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड हैप्पी लाइव बर्थ। और अगर उसका बीएमआई 19 to 30 के बीच में तो फिर भी सक्सेस रेट ज़्यादा होता है। इफ़ द बीएमआई आउटसाइड दिस रिड्यूस द सक्सेस रेट ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर। और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि जिससे फर्टिलिटी इफेक्ट करती है। अगर पेशेंट अल्कोहल ले रही है, कैफीन ले रही है या स्मोकिंग कर रही है तो फिर ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, फर्टिलिटी पे इफेक्ट करती हैं और आईवीएफ ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट भी कम करती हैं। तो ये भी हमने डिस्कस करना होगा पेशेंट को। अच्छा, फुल साइकिल का क्या मतलब होता है कि वन एपिसोड ऑफ द ओवेरियन स्टिमुलेशन और ट्रांसफर्स ऑफ द एनी रिजल्टेंट फ्रेश फ्रोजन एम्ब्रियो, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं फुल साइकिल। इफ़ द पेशेंट इज़ अ 40 ईयर, अंडर 40 साल से उसकी कम उम्र जो है वो कम है और 2 साल से वो कंसीव नहीं कर रही और 12 साइकिल उसने आईयूआई की भी ले चुकी है, फिर भी कंसीव नहीं कर रही, तो उस कंडीशन में हम उसे कितनी साइकिल देंगे आईवीएफ की? 3 साइकिल देंगे विदाउट एक्सी, ठीक है। पर अगर उसकी उम्र 40 तक पहुंच गई है, ट्रीटमेंट द फुल साइकिल करंट फुल साइकिल बट डू नॉट ऑफर दी फिर फर्दर हम साइकिल, अगर उसने 3 साइकिल ले चुकी है तो फिर हम उसके बाद 40 तक पहुंच गई तो उसको उसके बाद हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे आईवीएफ का, ठीक है। अगर उसकी उम्र कितनी है, 40 और 42 साल के बीच में है और 2 साल से कंसीव नहीं कर रही, 12 साइकिल आईयूआई की भी ले चुकी है, तो फिर उसमें हम 1 साइकिल देंगे आईवीएफ की, ठीक है। और वो भी तब देंगे जब उसने पहले आईवीएफ का ट्रीटमेंट ना लिया हो और ओवेरियन रिजर्वायर उसका नॉर्मल हो। और उससे हम पहले डिस्कस करेंगे आईवीएफ के क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं इस एज में, क्योंकि इस एज में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज़, डाउन सिंड्रोम, इसका भी रिस्क ज़्यादा होता है। तो सारी चीज़ें हम पेशेंट के साथ डिस्कस करके फिर हम उसे एक फुल साइकिल आईवीएफ की दे सकते हैं विदाउट एक्सी। ओके, ओवेरियन रिजर्वायर टेस्टिंग हम कैसे ओवेरियन रिजर्वायर पेशेंट में चेक करते हैं। सबसे पहले तो ओवेरियन रिजर्वायर तो हम उसका मोस्ट जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है वो है एज, ठीक है, एज पेशेंट की कितनी है। अच्छा, उसके बाद एएफसी काउंट, अगर वो 4 से कम है तो इट मीन्स ओवेरियन रिजर्वायर लो है। अगर 16 से ज़्यादा है तो मतलब हाई रिस्पॉन्स है। एएमएच अगर 5 से कम है तो फिर लो है। अगर 25 से ज़्यादा है तो फिर हाई रिस्पॉन्स है। एफएसएच का लेवल अगर 8 से ज़्यादा है तो फिर मतलब लो रिस्पॉन्स है। एफएसएच में सिर्फ उल्टा है, ठीक है। और 4 से कम है तो इट मीन्स हाई रिस्पॉन्स है। ओके, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट उसका क्या प्रोटोकॉल है, ठीक है, हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देयर इज़ अ डाउन रेगुलेशन एंड द अदर रिजीम टू अवॉइड द प्री मेच्योर एलएच सर्च इन दी आईवीएफ, ठीक है। तो कौन सी रिजीम है, एक होता है लॉन्ग प्रोटोकॉल, एक होता है शॉर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो लॉन्ग प्रोटोकॉल में हम क्या देते हैं, गोनाडोट्रोपिन एगोनिस्ट देते हैं और शॉर्ट प्रोटोकॉल में एंटागोनिस्टिक देते हैं, ठीक है। तो उसका क्या बेनिफिट है एंटागोनिस्टिक का, यही है कि उसमें ओएचएसएस का और मल्टीपल प्रेगनेंसीज का रिस्क कम होता है, ठीक है। ओके, एफएसएच का डोज हम कैसे डिसाइड करते हैं, वी विल डिसाइड द एफएसएच डोज अकॉर्डिंग टू द एज, बीएमआई, प्रेजेंस ऑफ द पीसीओस एंड द ओवेरियन रिजर्वायर। अच्छा, एफएसएच हम कितना दे सकते हैं, हम 450 से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। ओके, पेशेंट्स को जब हम आईवीएफ का ट्रीटमेंट देते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड मॉनिटरिंग मस्ट होती है, ठीक है। हम नेचुरली कंसीव नेचुरल साइकिल के लिए भी छोड़ सकते हैं आईवीएफ पे, बट उसमें इतना प्रेगनेंसी रेट नहीं होता अगर हम ओव्यूलेशन स्टिमुलेशन करें क्लोमिफेन सिट्रेट से या गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेटेड ड्रग से, तो फिर उसमें प्रेगनेंसी रेट अच्छा होता है। डीएचईए और ग्रोथ हार्मोन का कोई रोल नहीं है आईवीएफ ट्रीटमेंट में। अच्छा, हाउ विल यू ट्राइगरिंग द ओव्यूलेशन इन द आईवीएफ बाय गिविंग द एचसीजी to trigger the ovulation in IVF treatment. You will do the ultrasound monitoring for the ovarian response as an integral part of the IVF treatment. Okay. सो हम oocyte और स्पर्म कैसे निकालते हैं, हम उससे पेशेंट को कॉन्शियस सेडेशन दे सकते हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल एंड द सेफ. And when a woman is developed at least 3 follicles before the oocyte retrieval, then you will not offer the follicle flushing because it increase the pain and increase the durations of the oocyte retrieval. So you will not do the follicular flushing if there is the 3 follicle before the oocyte retrieval. Okay, surgical sperm recovery before the ICSI may be performed using the several different techniques depending on the pathology. In all cases, the facilities for the cryopreservation are the spermatozoa should be available.
Assisting hatching is not recommended. Okay, then you will do the, after oocyte retrieval, then you will do the embryo transfer. ठीक है, so it is done by the ultrasound guidance, and you will not transfer the embryo if the endometrial thickness is less than the 5 millimeter. Bed rest does not improve the effect of the IVF treatment. So how much number of the embryo you will transfer? You will not transfer the more than 2 embryo at a one time of the one cycle. So if the age is less than the 37 year, then you will give the 3 cycle. So in first full cycle you will give the keep the 1 embryo, and in the second cycle, if the one or the more top qualities embryos are available, then you will transfer. In the third full cycles you will not give the more than 2 embryo. If the age is the 37 to 39 year, in the first and the second full cycle you will either give the 1 or the more embryo if there is a good quality, but in the third cycle you will not give the more than 2 embryo. In 40 to 42 year of the age, double embryo transfer at the, क्योंकि उसमें साइकिल ही हम एक ही देते हैं ना, तो उस पर उसमें 2 एम्ब्रियो एक साथ ही रखते हैं पेशेंट को, ठीक है, ट्रांसफ़र करते हैं. Okay, embryo transfer based on the age of the donor. No more than the 2 embryo transfers in the 1 cycles of the IVF, where the top quality of the blastocyst is there. You will transfer the embryo at the stage of the blastocyst, ठीक है, offer the cryopreservation to store the remaining embryos. What you will give for the after the embryo transfer into the uterine cavity of the female, then you will give the luteal phase support for at least 8 weeks. You will give the luteal phase support. What you will give? You will give the progesterone. Okay, no HCG is given for the luteal phase support. Okay, you will in the IVF treatment there is advantage that you will you will diagnose the genetic conditions, ठीक है, genetic disease, and you will offer the proper counseling and testing of the genetic disease. You will do the ICSI in those patients having the severe deficit of the semen quality and when there is a non-obstructive azoospermia. So in this case you will take the men's karyotype. Okay, so the testing for the Y chromosome microdeletions should not be regarded as the routine investigation before the ICSI. Okay, what are the indications for the donor insemination? मतलब किसी और से स्पर्म लेके उसके अपने हस्बैंड से नहीं, क्यों नहीं ले सकते उसमें से, क्योंकि कौन सी कंडीशंस में हम डोनर से स्पर्म लेते हैं? जब ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो पेशेंट में, ठीक है, या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो, या सेवर डेफिसिट इन द सेमन क्वालिटी इन द कपल हु डू नॉट विश टू अंडरगो द ICSI, ठीक है. तो फिर इन और व्हेन देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ द ट्रांसमिटिंग द जेनेटिक डिसऑर्डर्स और व्हेन देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ द ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग आर to the woman from the man, and when there is a rhesus immunizations. So in all these cases you will do the donor inseminations. आप स्पर्म लेते हैं डोनर से, ठीक है. If the female is ovulating regularly, then you will offer the 6 cycle of the donor inseminations. ट्यूबल असेसमेंट इन द केस ऑफ दी ट्यूबल असेसमेंट करनी चाहिए अगर आप डोनर इंसेमिनेशन कर रहे हैं. तो अगर पेशेंट की हिस्ट्री नहीं है और शी इज़ ओव्यूलेटिंग रेगुलरली और देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ द ट्यूबल डैमेज, देन यू विल offer the tubal assessment after the 3 cycle. But if there is history, then you will do the tubal assessment before the डोनर इंसेमिनेशंस, ठीक है. तो मतलब अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री नहीं है तो फिर आप 3 साइकिल डोनर इंसेमिनेशन की दे सकते हैं, ठीक है, डोनर IUI की 3 साइकिल दे सकते हैं. फिर उसके बाद अगर उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर रही, ठीक है, तो फिर आप ट्यूबल पेटेंसी चेक करेंगे, ठीक है. अगर वो हिस्ट्री ऑलरेडी दे रही है, ठीक है, तो फिर पहले आप ट्यूबल असेसमेंट करेंगे, फिर उसके बाद उससे ट्रीटमेंट ऑफर करेंगे. Okay, indications for the oocyte donations in the ovarian failure, gonadal dysgenesis, bilateral oophorectomy, or oocyte donations should be also be considered when there is a high risk of the transmitting a genetic disorder. Okay, oocyte donors should be screening for the infections in the genetic disease, and you will counsel for the OHSS in the oocyte collection.
Cryopreservation of the semen and the oocyte and the embryos use the freezing in the liquid nitrogen vapor is the preferred cryopreservation technique. Oocyte and the embryo cryopreservation, women of the reproductive age who are preparing for the medical cancer, कब हम करते हैं, जब किसी पेशेंट को हम कैंसर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसमें रिस्क होता है कि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर या इनफर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इन केसेस में हम पहले से ही oocyte या एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं. ठीक है, कब तक हम स्टोर कर सकते हैं? 10 ईयर्स तक कर सकते हैं. ऑफर द कंटिन्यू स्टोरेज ऑफ द क्रायो प्रिजर्व्ड स्पर्म बियॉन्ड द 10 ईयर्स टू द मेन हु हैव द रिस्क ऑफ द सिग्निफिकेंट इनफर्टिलिटी. ओके, लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी असेसमेंट, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के क्या इफेक्ट हो सकते हैं? देयर इज़ अ माइल्ड इंक्रीज रिस्क ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर. So you will counsel the patient before starting the treatment.